Hello guys, a very good evening to all of you. Welcome back. Welcome to Textbook Regulatory Bodies. Guys, in this particular video, we are going to talk about all about the SEBI Grade A examination. Okay. So if you are planning for SEBI Grade A 2026 Grade A paper, so what are the core fundamental of this particular examination? Basically, we will be starting with the strategy portion, the eligibility areas. Apart from the eligibility, we will be talking around the educational qualification, your age groups, and apart from this, the exam pattern आपका phase 1, phase 2 and phase 3. Along with that, we will be talking around the cutoffs from the last few years and your phase 2 subject strategy also. And apart from that, we will be talking around some sources or the books and the other preparation portion, right? So this is a kind of a comprehensive video, like which will help you that this post is belongs to you or not, right? So like let's say if you are having some sort of background or some sort of educational qualification, so we'll try to make a sync कि you should prepare for this particular one and not, right? So let's start the discussion with very first area, which is your eligibility criteria, right? So when it comes to SEBI grade A examination, so the age limit is basically 21 to 30 years. It is similar to other regulatory bodies examination also. Like if you prepare for RBI grade B or any other regulatory bodies, you will see this particular one, right? And when it comes to nationality, so it is Indian. When it comes to the educational qualification, so we do have graduation also again. So for graduation there are some specific courses, otherwise it is aapka master degree, right? So we will be talking around those particular one in detail once we'll come with the notification part. Number of attempts as such, there is like as per the latest notification of 25, there was as such no numbers aapka, okay? So you can attend for any number of time to this particular one, right? So when it comes to the exam pattern, so this is a basic information. When it comes to exam pattern, so in examination, like the exam of SEBI grade A, which is generally conducted among three phases. तो तीन phases आपके यहाँ पे होंगे. Phase 1, which is kind of you just have to pass the cutoff itself, okay? So that will not get included in your overall selection. Merit will be decided based on your phase 2 and interview portion, right? So basically phase 1, where up the like if you go for other regulatory bodies exam, let's say if you go for RBI, so you have only one paper. And here with SEBI grade A, you will be having two paper back to back. One is paper 1, which is related to your quant reasoning, English and general awareness. So you will get total आपका 100 marks and 1 hour time for this one. And then just after that, you have to go for the paper 2, same time. So it is आपका concern subject, like we will be talking around the journal stream. So journal stream, which include subjects like your commerce, accountancy, costing, company law, economics, and others, they are generally part of this particular one, right? So when it comes to the first one, your paper, like you can write this particular paper in Hindi or in English. तो जिस भी language में आप comfortable हैं उसमें आप इसको दे सकते हैं, ठीक है? And apart from the only English portion itself, and the paper will be in multiple choice. So MCQ format के अंदर आपको paper मिलेगा. So paper 2 general stream, when it comes to, we have again MCQ base, where we have commerce, accountancy, management, finance, costing, companies act and economics. Now the good thing is the same subject you will see in your phase 2 पेपर 1 itself, right? तो एक बार आपको यहाँ पे इनको बहुत अच्छे से डिटेल में अगर आप स्टडी कर लेते हैं इन सभी सब्जेक्ट को, सभी सब्जेक्ट मींस लाइक देखो यहाँ पे काफी अदर, जैसे लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट द कॉमर्स और अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग, अब इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CMA और CA थिंग्स, वहां पे या इफ यू सी द करिकुलम ऑफ 10th और 12th ग्रेड, तो वहां पे काफी ज्यादा डिटेल में सारी चीजें, तो यहाँ पे दे हैव गिवन सम स्पेसिफिक टॉपिक एंड मोस्ट ऑफ द टाइम they ask question within those particular one. So you have to make your command on those keywords which are generally given in the syllabus portion, right? So this is आपका which is first thing.
And if you go for the legal stream or IT and others, they do have their defined syllabus and all, right? So there shall be a negative marking of 1/4, first of all, in paper 1 and paper 2 of phase 2. There, this is something key. Now the cutoff thing is, आपका you have to score 30%, and here you have to score आपका 40%. ठीक है? So overall 80 marks आपका, that is the cutoff for this particular one. So if you score 80 marks, there is no आपका like competition based cutoff. ठीक है? So that means you just have to score this much in these two आपका subject, and you will be qualified for the phase 2. अब जैसे other examination में क्या होता है कि apart from that overall cutoff, like there is sectional cutoff. Apart from that sectional cutoff, you have to clear the overall cutoff, which is decided based on the competition itself. But here it is not like that. You just have to qualify this one. ठीक है? So जितने भी candidate हैं, let's say 100 candidate आपका appear in this one. If 80 आपका qualify this particular one, they all will be eligible for phase 2, right? तो यहाँ पे ऐसा कोई norm नहीं है कि there will be some different cutoff for those 80 people and not, right? So first thing, that is the part. There shall be a cutoff आपका minimum 30% in paper 1 and 40% in paper 2. Candidate would need to secure separate cutoff for each paper. ठीक है? अब ये joint आप नहीं कर सकते, so you have to have score 30% here and 40% here. Paper mentioned in आपका this above, as well as aggregate cutoff of आपका 40% of phase 1 examination shortlisted for the phase 2. ठीक है? Marks obtained in phase 1 will be used only for shortlisting candidate for phase 2. They will be not counted in your overall selection itself, right? So means once you clear the phase 1, सभी लोग exist हो जाते हैं वहां पे आके, right? Again they have to work around the things, and phase 2 के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. Subject to criteria आपका mention in आपका third one. Above all the candidates who clear the phase 1, they'll be shortlisted for phase 2, and they'll get आपका एडमिट कार्ड लेटर फॉर द फेज 2 इटसेल्फ. ठीक है? तो पहला ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा अदर एग्जामिनेशन से थोड़ा सा डिफरेंट आपका है. ठीक है? तो फर्स्ट सेक्शनल कट ऑफ इज समथिंग की लाइक पेपर 1 का कट ऑफ 30%, पेपर 2 का कट ऑफ आपका 40%, ओवरऑल आपका 40% का कट ऑफ होगा. एंड वंस यू आपका लाइक लेट्स से अगर आप यहाँ पे 100 मतलब पूरे का पूरा भी लेके आने, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और दूसरा, अगर आप इस कट ऑफ लाइन से एक मार्क्स भी ऊपर है, स्टिल यू आर इन दैट केस. बट द गुड थिंग इज कि लाइक हाँ, एक अच्छी चीज एक और है कि यहाँ पे द सेम सब्जेक्ट विच यू आर गोइंग टू फेस इन फेज 2 ऑल्सो. ठीक है? सो व्हेन इट कम्स टू फेज 2, now phase 2, again we have two things. One is paper 1, which is all about your English descriptive. Last time 2024 that was kind of bit challenging, तो उस समय थोड़ा सा पेपर का लेवल इजी था. बट इस टाइम अगर हम बात करें 25 का, पेपर लेवल वाज आपका मॉडरेट टू टफर साइड फॉर द फेज 1 इटसेल्फ, राइट? तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव अगर हम बात करते हैं, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्ट्रीम. So here you'll get 3 question आपका. ठीक है? Again same timing and others, and even आपका the weightage also, right? The second one we have general stream. Same आपका MCQ format will be there. There is no descriptive for the paper 2. ठीक है? So where we have commerce, accounting, management, finance, costing, companies act and economics, same as in your previous one, right? So 100 आपका, then again 40% weightage will be given to this particular one. And if you go for legal stream and others, so they have a different requirements and all, right? So the overall summary of your phase 2, ठीक है? So paper 1, which is आपका descriptive writing. ठीक है? Here when it comes to the descriptive writing आपका, ठीक है? So 100 marks आपका, 60-minute time, no negative marking in this particular case basically. And phase 2, 100 question again आपका, 90-minute time, and the negative marking will be 1/4 in this particular case. So this is something आपका which is about this. Now when it comes to phase 2, okay, this is something which is very important one, and most of the people or most of the serious candidate, they will be clearing आपका phase 1 easily. Now phase 2 will be your game changer. So here you do not have to only focus around the paper 2, even paper 1 is also very important. You have to practice that particular portion very well, because last time the maximum selection was based on this one, because the paper 2 was easier side. So when it comes to आपका here, we have English descriptive. So this is something which you have to read editorials, and you have to build that आपका writing practice in others, that will be required in this case, similar to your SBI PO examination and all, and you have to type those particular question on the screen itself.
पेपर टू आपका, दिस इज समथिंग फॉर जनरल, इट इज आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, एंड दिस if you have read those particular concepts of fundamental very well, you will be able to answer those particular questions. But the thing is, most of the people will be able to answer similar set of questions and all. So that's why in this case, this will become aapka game changer. So this is something where you have to put some additional effort, and mostly the question will be applied based question or some numericals and case studies that will help you in this case. So let's decode the aapka phase one. So here we have mostly précis writing, essay writing, and your aapka comprehension. Okay, these are the part of your paper one. So you have to build writing practice on these particular one. Paper two, when it comes to paper two, so we have commerce and accountancy, economics, aapka companies act, management, finance, and aapka costing. So these are the areas. Let's go through all these particular one by one. So when it comes to commerce and accountancy, so we have accounting as a financial information system, which is all about the basic or the core of accounting system and all, right? So this time, like along with that, uses of accounting, type of accounting, some basic journal entries, concept, convention, and all, they comes under this one. So accounting standards aapka team with regard to, so you do not have to go through all the accounting standard. There are few like depreciation, inventories, revenue recognition, fixed asset, forex, and investment. So they have given in your, and same things which is generally part of your phase one also. Apart from this financial analysis part in commerce and accountancy, cash flow and fund flow statement. So you can expect आपका numericals in phase two, and financial statement आपका, where we have financial statement analysis, means your balance sheet, profit and loss account related question, and ratio analysis. This is something which is आपका kind of favorite part for the examiner. They mostly ask one or two question around this particular one. Third part is corporate accounts आपका, where we have share capital, bonus shares, right issue of shares, ESOPs, buyback, or preparation of company's final accounts, balance sheet, and profit and loss account. So this is the overall curriculum. This you have to prepare in phase one conceptually. You have to work around those things, and phase two mostly आपका things will be applied or your आपका case based things and all, right? When it comes to paper two आपका, which is management, in the same one again. So management, which include areas like if you have prepared management very well for RBI grade B examination, you do not have to worry about this. Only topic which you have to study, that is HRD, human resource development, and they have given a limited content of management also, right? So we have management functions आपका, ठीक है, planning, organizing, staffing, directing, and controlling, role of managers. Then we have leadership style and theories, task of leadership, successful versus effective leadership and all, transformational and आपका transactional leadership. HRD concept, this is something आपका new which is not part of your RBI grade B examination. So this is the only subject up. Otherwise in RBI they have given almost आपका part of management, but they are very selective. But you have to build command on these particular one. Communication is part of both examination. So role and others, they generally comes under this one. Okay. Next subject we have, apart from this, so HRM, HRD, and आपका communication. These are two important areas. There are high probabilities कि you will definitely get question around this, especially in phase two आपका, ठीक है. Phase one, this is for phase one and phase two, and this topic is something which will आपका which will have more and more kind of weightage in phase two examination, these two areas. So you have to build your concept around these particular thing very well. Now next one, finance. When it comes to finance आपका, ठीक है, so financial system, role of regulatory bodies. Then we have financial market, ठीक है, primary, secondary, forex, equity, debt. We have functions, instruments, and recent development. And apart from this, derivatives, financial inclusion, alternative finance, or the recent development in the sector, taxation, आपका inflation policy, monetary policy, and others. These are the one. So if you are preparing for RBI grade B, for sure you guys are preparing for these particular thing. Like two things. If you having only target आपका, like let's say सिर्फ और सिर्फ सेबी ग्रेड ए को टारगेट करें, नॉट, दिस इज नॉट अ राइट डिसीजन एक्चुअली, ठीक है. सो विद दिस पर्टिकुलर वन व्हाट यू कैन डू, आपका जैसे PFRDA है, IFSC, they have similar, NHB also, NFS, आपका NPS also, all these are having similar set of content.
But if you are preparing for RBI grade B and if you simultaneously targeting this, तो management, finance और आपका ESI, these are the three subjects you can eliminate in your early journey. So you can focus around the other things and all, right? चलो. So when it comes to costing, तो costing this is something new आपका for all. तो costing overview आपका introduction, scope, cost and management accounting, cost and financial accounting, methods of costing, very important area आपका, ठीक है. So they have given almost all type of or all method of costing. Then we have cost control, standard costing, marginal costing, budget and budgetary control. Lean system and innovation is very important again, ठीक है. So introduction to lean, JIT, आपका Kaizen, 5S, TPM and Six Sigma are part of this one. आपका one piece flow or cellular manufacturing or BPR. These are the areas. So these are the keywords which is given in your notification itself for 2025. So this is something ki mostly what you will face if you are not having any background from commerce or आपका CA, CMA and others. You will be facing some sort of challenges in these areas. So here these are the subject जिनको आपको सबसे पहले आपका initiate करना है, right? Company law. अब the another thing is company law where आपका sources is best. You can directly go for the law itself and just pick these particular chapters, right? Chapter 3 they have included 4, 5, 4, 8, आपका 10, 11, आपका 12 and your 27, right? So these are the chapters from your company law. So if you go for the you can easily find out the PDF of Companies Act 2013 and Companies Act 2013, and you can directly go for these particular. That is the best source for the preparation itself, right? So that is something which is related to this particular one. So see, these are some areas which is like, now the next one is economics. So where we have demand and supply, market structure, national income concept and measurement. Okay. Then we have output and employment determination, consumption and investment function, multiplier and accelerator and IS and LM modem आपका. This is something आपका which is related to your core economics. And then we have inflation and Philip curve, business cycle, balance of payment in this. One thing, if you are a banker and if you have done your JIB and CIB certification, especially JIB, not even CIB, okay? So these, your ESI will be get covered through the INIFS. Your most of the portion of Companies Act will be get covered through your BRBL subject in CIB, or आपका costing will get covered through your AFM subject, and accounting will also get covered through AFM subject. So if you are working on these with these particular institution, go for those particular certification. They'll give you monetary benefit, salary increment on monthly basis, and here again आपका these certifications are helping you to prepare or to prepare your focus on these kind of regulatory bodies examination also, right? So these were the subject. The same curriculum you will be having in your phase 1 as well as in your phase 2. तो दोनों ही में आपको सेम करिकुलम के साथ आपका बैठना है, ठीक है? तो एक बार अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ऑब्वियसली वो आपको फेज 1 में भी हेल्प करेगा और फेज 2 में भी हेल्प करेगा, राइट? तो अभी our notification will come around like this time it came around 30th October, तो end of the October, ठीक है? तो next month, next year also you can expect around September, October only. तो अभी you have like almost 7-8 months in your hand. तो प्रिपेयर वेल, अभी से रेगुलर कंट्रीब्यूशन कीजिए धीरे धीरे आपका, बिकॉज बिफोर दिस यू विल बी फेसिंग सिमिलर सेट ऑफ कंटेंट इन योर दैट विल हेल्प यू इन PFRDA और IFSC और NFS, NPS. So these are the examination जहाँ पे आपको हेल्प करेगा. Final phase is your interview. So all the selected candidate, ठीक है? So only shortlisted candidate will be called for interview. Application fee shall not be refunded to the candidate not shortlisted in phase 2 or an interview. Candidate may opt for interview either in Hindi or English. Weightage of marks obtained in phase 2 will be 85%, ठीक है? तो overall आपका 100 selection will be based on 100 marks. Out of 100 marks, ठीक है? So we will give 85% weightage to आपका this and 100 marks interview. Then आपका whatever score you will get, 15 marks weightage will go to this particular one, ठीक है? So इसमें भी they have done आपका interview which is आपका 75% and आपका qualification experiences. Like let's say
you have done some sort of certifications and all, so that will help you in this particular situation. So आपका 25% weightage, overall 15 marks weightage will be there, right? So that is something which is generally part of your examination on the curriculum. One suggestion, if you guys having this kind of आपका educational background and all, believe me, this job is for you. And when it comes to the salary, so you can see it will start with around 1,56,000 or something, right? So the initial salary, no, sorry, it approx आपका 1,84,000 per month as a आपका beginner, ठीक है? So you do not need any sort of experience and all, so that will be paid, ठीक है? So when it comes to the overall areas, the grade आपका it start with the 62,500 and within 17 years it will be आपका 1,26,100. So on 62,500 grade, you will be earning this much of money. And apart from this, you'll be having leave fare concession, medical expenses, eye refraction, knowledge upgradation allowances. If you go for some certification and all, company will, आपका organization will pay for this one. ठीक है? Briefcases, आपका convenience expenses, house cleaning, आपका staff furnishing, आपका purchase of computer, subsidized lunch, everything we need आपका that will be provided by the organization. Even accommodations, आपका residential accommodation would be provided subject to availability also. Posting, आपका initially it should be आपका ट्रांसफर टू लोकेशन से भी इन दिस आपका हाँ सो दे डू नॉट हैव मेंशन कि इनिशियली यू विल बी इन मुंबई एंड ऑल बट हाँ सो दिस इज द समथिंग व्हिच इज ऑल अबाउट दिस सो विद लाइक दीज आर द कोर बेनिफिट ठीक है और द प्राइमरी बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो देयर आर मेनी अदर बेनिफिट लाइक यू विल बी हैविंग मतलब दैट सोशल रिकॉग्निशन सोशल स्टेटस विद these kind of organization तो कहीं ना कहीं this is something आपका which is like whatever efforts you are putting forth in the coming 7 to 8 months आपका that will definitely pay off right तो वो सारी चीजें आपका जितना मेहनत करेंगे सब आपको eventually आपका वो benefit देंगे and you will be having a great work experience ठीक है तो basically when it comes to the job profile तो job profile में you will be you working with a regulator that means you will be handling the supervision part or policy drafting or your interactions will be with आपका डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज तो वो सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो आपको नहीं मिलते जो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडीज के साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे राइट तो ये एक आपका बेसिक एरिया नाउ सो व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक है सो दिस ईयर इट वाज 107 ठीक है सो दिस इज फॉर आपका जनरल पोस्ट हाँ 50 earlier आपका 56 no it was 107 आपका in the recent one ठीक है last year if you talk about so it is आपका the total number of vacancies was 34 in 2000 this is about your 2025 and this is about your आपका 2024 ठीक है 24 आपका there was 34 vacancies for the general post ठीक है and आपका when it comes to 2022 so it is आपका again 32 right तो usually पहले कैसा होता था कि हर 2 साल में एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाता था ठीक है so let's say 2022 देन आपका 24 लेकिन उन्होंने 2025 में भी आपका कंडक्ट किया राइट सो दैट इज द वन नाउ वन थिंग कि लेट्स से when it comes to educational qualification many people having confusion ki master degree but some bachelor degrees are also allowed जैसे मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिनिमम 2 years आपका इन एनी डिसिप्लिन बैचलर डिग्री इन लॉ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और आपका सीए चार्टेड अकाउंटेंट आपका ठीक है वी हैव चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट आपका सीएफए कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट अकाउंटेंट ठीक है सो दिस इज द क्वालिफिकेशन फॉर योर आपका journal stream ठीक है so if you have done these kind of things so you will be eligible for this and you can apply for 2 posts any 2 posts ठीक है one is journal and let's say if you have done graduation in law or if you have done engineering so with journal you can also go with आपका let's say law तो legal post or if you have done IT, so you can go for the IT post also. So 2 posts you can apply in this particular situation also, right? So that is something which is related to this. So number of vacancies आपका you can expect around the same numbers as we experienced this time. So 107 vacancies was there. Similar to आपका around
like similar numbers you can expect in coming years also, right? So this is the one. Now when it comes to the cutoff portion, okay, so let's talk about the cutoff also. So phase 1 का cutoff is clear. You just have to score 30% of your paper 1, 40% of paper 2. That's it. You will be allow for phase 2. And उसके बाद phase 1 का कोई लेना देना नहीं है, because the overall merit will be decided by based on the phase 2 and paper आपका phase 3. Phase 3 which is interview plus certification. 85 and 15 आपका the overall weightage, ठीक है. सो फेज 2 का अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो अभी 25 का एग्जाम शेड्यूल है 21 जनवरी फरवरी को, बट 24 का फेज आपका कट ऑफ कैसा था, 23 का कैसा था, मतलब 22 का, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है. सो व्हेन इट कम्स टू जर्नल स्ट्रीम, सो बेसिकली आपका द कट ऑफ आपका फॉर दिस पर्टिकुलर वन वाज 62.50. सो हियर इट वाज आपका 62.50. ST आपका इट वाज 64.50. 63.83 आपका OBC. EWS 62.50. 67 आपका PWBD. फॉर अनरिजर्व इट वाज आपका 66.50. ठीक है, तो 66.50 वाज द कट ऑफ फॉर योर अनरिजर्व कैटेगरी एंड ऑल इन 2024 आपका, ठीक है. इट वाज गॉट रिलीज अराउंड दैट पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है. व्हेन इट कम्स टू 2022, तो 2022 के अंदर इफ यू विल सी द कट ऑफ फॉर जर्नल लेवल, ठीक है. सो जर्नल आपका अनरिजर्व इफ आई कम, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है. नो, यहाँ पे कुछ, हाँ, द कट ऑफ इज आपका 62.34%, ठीक है. तो 62.34 वाज द कट ऑफ फॉर आपका 2022, और यहाँ पे कितना 65 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 66.50 आपका, राइट. तो दीज वर द वन. सो जैसे इस साल का आपका एग्जामिनेशन होगा या जैसे इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वी विल बी कम अप विद दैट पर्टिकुलर वन कि व्हाट वाज द कट ऑफ इन अदर थिंग्स, वी विल बी डिस्कसिंग दैट वन आल्सो. तो बेसिकली दिस इज समथिंग आपका बेस्ड ऑन योर फेज 2 एंड आपका इंटरव्यू. तो उनका ओवरऑल 100 मार्क्स, उसमें से दिस वाज द वन. एंड 100 मार्क्स का बाइफर्केशन इज आल्सो कि वी हैव योर kind of 85 and 15% weightage to both. Now when it comes to books आपका, ठीक है. So see guys, books में first of all like you let's say if you are studying commerce and accountancy, you can go with NCERT. There is no issue with that one. The only thing is कि you do not have to go through the entire book. अब देखो, जब कोई book लिखी जाती है, they have some specific purpose. Like let's say if it is for the academics, they'll be covering the comprehensive course and all, right? So अब वो सेबी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बुक नहीं लिखी गई है. तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू क्लियर अराउंड दिस पर्टिकुलर थिंग. तो बुक्स आपका जैसे like if you are a banker and if you have done that JIB things or CIB things, तो BRBL वाला things will help you in company law, selective topic. AFM will help you in your आपका that commerce and accountancy and costing. IFS will help you in your economics and finance. बहुत अच्छा कंटेंट है. मैकमिलन की बुक्स हैं आपका IIBF के द्वारा जो अप्रूव बुक है मैकमिलन पब्लिकेशन के अंदर, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक आल्सो, सो जिससे आप उन बुक को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है. सो दूसरा, और एल्स आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे इसके अलावा जैसे नॉर्मली सजेस्ट किया था, जैसे अकाउंटिंग के लिए आप जा रहे हो तो इनके ना जैसे CMA है तो उनकी ई बुक्स भी आपका अवेलेबल है उनके वेबसाइट के ऊपर, ठीक है. ICWA वेबसाइट को अगर आप ओपन करेंगे या ICAI फॉर आपका कॉमर्स जो CA लोग हैं उनके, तो उनकी स्टडी मटेरियल भी आप रेफर कर सकते हैं. बट ये जो जितने भी स्टडी मटेरियल है ना, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको मिलेंगे क्योंकि उन्होंने अपने करिकुलम के हिसाब से डिज़ाइन किए गए. तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा. जस्ट अगर आप डाउनलोड करते हो उन एरियाज, उन चैप्टर को आपको लेना है उसमें से जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर या नोटिफिकेशन के अंदर या जो अभी मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है. कंपनीज एक्ट आपका, इसके लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है. जस्ट आप जो कंपनीज एक्ट 2013 इस नाम से सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा. PDF डाउनलोड करो, उसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना है. जो आपका जो शेड्यूल आपका दिए गए सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है. मैनेजमेंट के लिए आपका जैसे आपके उसमें लिखा गया था LC LS गुप्ता और रॉबिन्स एंड अदर्स, ये बुक भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा एक्चुअली. इफ यू आर हैविंग एनी कोर्सेज जस्ट स्टिक टू दोस पर्टिकुलर वन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दीज वन. क्योंकि देखो जब इन्होंने ये बुक लिखी ना, इनका ये मोटिव नहीं था
कि आपका किसी गवर्नमेंट एग्जाम में हम इनको यूज करेंगे, राइट? तो दैट वाज इज लाइक ऑल अबाउट द मैनेजमेंट और ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स एंड अदर्स। या यूपीएससी में हम जा रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि हाँ ठीक है दिस इज द सब्जेक्ट, तो वहाँ पे डिटेलिंग होती है। बट यहाँ पे वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। जैसे अगर आप किसी से भी पूछेंगे इकोनॉमिक्स के लिए या फाइनेंस के लिए, तो प्रसन्ना चंद्रा है या फिर रमेश सिंह है, ये ऑब्वियसली हर किसी के रिकमेंडेशंस में होती हैं। बट मेरा सजेशन यही है कि what you can do, you can just focus on the areas आपका, ठीक है? इसके अलावा what else you can do, ठीक है? like let's say अगर आप एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का या ये सारे नोट्स या अदर्स इनकी रिक्वायरमेंट्स मॉक टेस्ट या अदर्स, सो यू कैन एक्सेस टू आवर वेबसाइट, ठीक है? सो दिस इज आपका testbook.com। अगर आप testbook.com पे आएंगे तो इस साइड में आपको मिलेगा रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है? सो वंस यू विल क्लिक ऑन रेगुलेटरी बॉडीज, हियर इट इज। तो रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर आपका जैसे ये अलग अलग कोर्सेज हैं, मेरा सजेशन है कि यू कैन गो विद आपका जैसे सेबी का कोर्स भी आपको मिल जाएगा, सेबी आरबीआई। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस पर्टिकुलर वन ना, देयर मस्ट बी आपका एक रेगुलेटरी सुपर पैक, ठीक है? सो वेयर इट इज आप रेगुलेटरी सुपर पैक, ठीक है? सो रेगुलेटरी एग्जाम आपका सुपर पैक विच विल बी कवरिंग आपका ऑल द एग्जामिनेशन, ठीक है? सो पूरे साल भर के अंदर जितने भी पेपर आपके होते हैं, लाइक राइट नाउ यू आर डूइंग क्लासेस फॉर आरबीआई ग्रेड बी, और आपका जैसे एल्डा का नोटिफिकेशन आएगा, विल बी डूइंग फॉर एल्डा, एनपीएस आएगा उसका, या फिर कल के डेट में अगर आपका जैसे कोई भी और एग्जामिनेशन है आपका, ठीक है, जैसे सेबी, पीएफआरडीए, सिडबी। अब ये कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है ना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी यू मस्ट गो फॉर पीएफआरडीए, आपका सिडबी, आईएफएससीए, एनपीएस। ये इन सब का करिकुलम इज आपका ऑलमोस्ट सेम, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही होती हैं। तो देखो टारगेट कैसा होता है कि लाइक लेट्स से लाइक मैक्सिमम पीपल दे आर प्रिपेयरिंग अराउंड आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है? वेल एंड अप गुड, you prepare for RBI grade B, but simultaneously with same preparation. Phase 1 is almost same for others, all the examination. अगर आपने RBI grade B का phase 1 prepare कर लिया, that means you are already prepared for all these particular आपका phase 1 examination, वो आपका एक focus होगा। तो उसमें इसके अलावा phase 2 के अंदर you have to make some add-ons, but first you have to clear yourself कि इस साल में 26 के अंदर दिस इज माई प्रायोरिटी लिस्ट कि आपका आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईएफएससीए, ठीक है? लेट्स से दीज आर ऑन माय लिस्ट, तो एनी हाउ आई विल बी गोइंग फॉर दीज वन। अब उसके अलावा ना जैसे बीच में कुछ आएगा, कोई और नोटिफिकेशन आती है, कुछ आता है, तो अगर वो आपकी लीग से बाहर है, प्लीज डू नॉट डेविएट इन दैट डायरेक्शन, ठीक है? कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो सोचते हैं अब 2 महीना है तो एक बार यहाँ पे हाथ मार लेते हैं, वो आप कहीं ना आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, ठीक है? तो जो आपका मेन गोल है उससे आप डेविएट हो रहे होते हैं। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, तो उस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है गाइज? तो ये एक आपका डिटेलिंग सेबी ग्रेड ए के लिए 26 का एक काइंड ऑफ रोड मैप। अगर आप अब आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से एग्ज़ाम है, क्या लेवल है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी है, कट ऑफ कैसा है, बेनिफिट क्या है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की, ठीक है? इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और क्वेरीज होंगी तो वो क्वेरीज आप अपने आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है? नोटिफिकेशन का अगर आपका क्वेरी है तो मोस्टली आपका सितंबर एंड आपका पकड़ के चलिए, सो यू हैव 6 to 7 months और 8 months इन योर हैंड। प्रिपेयर वेल आपका, एंड वो प्रिपरेशन आपको 3-4 एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी, बिलीव मी, राइट? So, and still if you are having any queries, please do let me know in the comment section. We'll try to help you out with those one. So this is it from my side, guys. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session. I'll see you soon with another sort of आपका videos. And if you are part of any live classes, so I'll see you in classes. So where we will be discussing concept fundamentals and we will be practicing all these आपका examination in detail. All right. So this is it and wish you all the very best for your preparation, guys. Thank you.